Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for Grade 2. We are going to start Unit 10. Its title is My Village. My dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. First, we'll discuss about it and then we'll discuss what this unit is all about. So, in lecture 1, under the title of grammar, we are going to learn about punctuation and we'll cover the SLO to recognize that a sentence ends with some form, punctuation, for example, full stop and question mark or an exclamation mark. Lecture 2, under the title of grammar, we'll learn about position words and we'll cover the SLO to recognize, identify and use a few words showing position, for example, on, to, at, in, from, etc. Lecture 3 will recite and understand the poem and we'll cover the SLO to read and recite short poems or nursery rhymes with actions and identify words that end with the same sound, for example, ng. Lecture 4, under the title of listening and speaking, we'll recite a poem in group and we'll cover the SLO to demonstrate common conventions and dynamics of oral interaction in groups to recite poems. Lecture 5, under the title of Read and Think, we'll learn how to read public notices and science, and we'll cover the SLO to follow instructions, school and public notices or science with visuals. Lecture 6, under the title of Writing, we'll learn how to make a greeting card and we'll cover the SLO to draw illustrations to make greeting cards using cursive writing, write appropriate words and formulaic expressions, write name of addressee and sender. Yes, my dear students and my dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. Now let's see what this unit, this beautiful poem is all about. Its title is My Village. Its theme is places, my village or city. Yes, my dear children. What does my village mean? मेरा गांव. और बेटा जो प्लेसेस हैं, बहुत से प्लेसेस हैं दुनिया में, तो हम उन प्लेसेस में से अपने गांव की कैसे बात करते हैं, ये इस पोम का थीम है और देखते हैं कि इसको किस तरह से पोइट ने डिस्कस किया है. Sparrows chirp and dance, cuckoo sings its sweet song. In the morning, soothing a chance, listening one stays and stays long. तो सबसे पहले स्टैंजा में शायर ने, पोइट ने अपने गांव की मॉर्निंग का जिक्र किया, यानी गांव की जो सुबह होती है वो कैसे होती है कि वहाँ पर चिड़ियों का चहचहाना और कोयल की आवाज़ के साथ सुबह का आगाज़ होता है और ये बहुत ही सुकून देने वाला मंजर होता है. यानी ये ऐसा मंजर है जो आपको सुकून देता है और आपका दिल चाहता है कि आप देर तक इस मंजर को देखते रहें. Trees adorn my village small, fields flow and grow green. जो दरख्त हैं वो अडॉर्न करते हैं, मेरे गांव को सजाते हैं, उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं और जो खेत हैं वो दूर तक हरे भरे खेत नजर आते हैं. Peace and harmony creates all alive and moving a scene. हर तरफ अमन और खुशहाली नजर आती है जिससे हर तरफ alive moving a scene, यानी हर तरफ हलचल और जिंदगी नजर आती है. गांव में जो सुबह होती है बेटा, शहरों में तो अनफॉर्चुनेटली सुबह बहुत लेट होती है, हम फजर के साथ उठते हैं, लेकिन गांव में जो लोग हैं वो फजर से भी पहले, किसान जो है वो फजर से भी पहले उठकर अपने दिन का आगाज करते हैं. इसलिए गांव की सुबह जो है वो बहुत ही पुरसकून और बहुत लॉन्ग होती है. राइट. Pigeons give a soft call, oh farmer go and plow, drop the wall after wall of laziness and work now. जैसे शायर ने परिंदों का, दूसरे परिंदों का, स्पैरो का और कुकू का जिक्र किया, इसी तरह पिजन इज ऑल्सो अ बर्ड और इसको उर्दू में कहते हैं कबूतर. तो कबूतर जो है वो भी आहिस्ता आवाज में आपको बुलाते हैं और किसान से कहते हैं गो एंड प्लाओ, जाओ जाकर
हल चलाओ, ड्रॉप द वॉल आफ्टर वॉल ऑफ लेजीनेस, सुस्ती की जो दीवारें हैं उन सबको गिरा दो, बिकॉज इट्स वर्क, इट्स टाइम फॉर वर्क नाउ, क्योंकि अब सुबह हो गई है और काम का वक्त हो गया है। तो बेटा इस तरह से शायर ने अपने गांव की सुबह को डिस्कस किया और आपके साथ उसको शेयर किया। तो हम जहाँ रहते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखना चाहिए और उसके बारे में हमें अपनी एक पॉजिटिव उसके अंदर से जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, राइट। और हमारी जो रहने की जगह है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें बताते हैं इट इज़ ही हु मेड द अर्थ। देखिए ज़मीन का जिक्र है, अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन हमारे लिए, पूरी दुनिया हमारे लिए बनाई है। Tame for you, so walk among its slopes and eat of his provision, and to him is resurrection। तो हमें इस ज़मीन की, बेटा जब हम ज़मीन पे चलते हैं बहुत हमें अच्छे तरीके से चलना चाहिए और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसके ऊपर, इसमें घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो। और जैसे अभी मैंने आपको गांव और शहर का कंपैरिजन बताया, तो ये कंपैरिजन हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़मीन जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, इस पर इस नियत से घूमना फिरना कि अल्लाह ने कहा है जाओ सैर करो, देखो कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने क्या निशानियाँ अपनी बनाई हैं। तो इस नियत से सैर करना भी इबादत की तरह है, राइट। तो जब भी बेटा आप कभी अपने गाँव जाएँ या गांव से शहर आए तो आपने ये जहन में रखना है कि अल्लाह ने हमारे लिए कैसे, गांव का मौसम कैसा फ़र्क है, शहर में क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, और गांव की जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं वो भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं ताकि हम अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें, राइट। सो बेटा ये दैट्स इट। कल हम इंशाल्लाह इसके ग्रामर के लेक्चर से इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। टिल दैट टाइम जो अच्छी चीज़ें आज हमने सीखी हैं इनको जहन में रखें, अपने अमल में लाएं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।